नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। बहुत अच्छा लगा। अगेन अ ग्रेट डे फॉर सतारा हिल हाफ मैराथन। कि हम लोग ने हम 3 एपिसोड्स हमने लगाए थे अभी तक। जो है एक दो पहला जो है हम लोग हमारा जो थीम है सतारा हिल हाफ मैराथन का, इस बार जो है रनिंग के बजाय और बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने फिटनेस के लिए, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमारा जो फर्स्ट थीम था वो था फिटनेस जिंदाबाद, फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट लोगों के लिए। सेकेंड थीम था हमारे लिए जो है रेस्ट जिंदाबाद या स्लीपिंग जिंदाबाद। और थर्ड जो हमारा थीम था लास्ट टाइम जो है हाउ वॉकिंग एंड अदर एक्टिविटीज क्रॉस ट्रेनिंग जिंदाबाद वाज इट। ये हमारा चौथा एपिसोड है। फोर्थ एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन, बिकॉज एज दे से द 3 पिलर्स ऑफ फिटनेस, एक जो है एक्सरसाइज, दूसरा जो है रेस्ट, एंड तीसरा जो है क्या खाने के लिए। ओके, सो खाने के बारे में बात करने के लिए हमारे पास हमारे जो पैनलिस्ट है, 2 डॉक्टर्स है हमारे पास। जो है एक तो है शी इज कम बैक पर्सन, शी इज द सेकंड टाइम शी इज कमिंग टू our channel. Her name is Dr Pallavi. She is the runner, she is a doctor, she is a nutritionist, and she is also the race director for Satara Hill Half Marathon. Namaskar. Hello, Namaskar. Hello, Rajesh. Good to How see are you you? back. Yeah, good, good. Yeah, good to see you back too. Yeah. So It पहले is पहले बताइए सतारा हिल हाफ मैराथन का प्रिपरेशंस कैसे चल रहा है? एज अ रेस जोर से डायरेक्टर, चल रहा हाउ है. इज इट? Yes, it is going on very good. अभी हमारा कल भी संडे लॉन्ग रन है. It is a 12 kilometers run, and we are very much ready for the run. It's raining here. The atmosphere is too good, not like Dubai where you are placed right now. So we'll be enjoying our 12 kilometers run tomorrow. Very good. Think about us, okay? People are in hot Yeah, conditions when definitely. you're enjoying it. Yeah, yeah. So, how's the preparations for Hill Half Marathon going on? All in full swing? Everything Yeah, getting ready? it's going on. Yeah, it's getting on in full swing. We have almost crossed 7,000 runners have registered. So it's a tough job now hereafter. Okay, fine. That. Yeah, So, what was the last times? जो last week का जो theme था वो क्या था? That was about protein. yeah, that was protein. Okay, Yeah. fantastic. So thank Yeah. you very much for coming in and spending Yeah. your time. And we got a list of questions, but let me also introduce our second panelist, Dr. Harshala. Namaste. Namaste. How are you? I'm fine. Okay, Dr. Harshala is a practicing doctor of Ayurvedic medicine, and also she's an obesity expert and consultant. And it's great to have you. Just tell us a bit about yourself, Dr. Harshala. I'm working in this health and fitness field from last 26 years. I'm running from last 5-6 years. My greatest achievement till date is virtual Everesting base camp, which I've completed in November, just 5-6 months ago. And, Very nice. That's and great. आपका जो number, yes, sorry. Yeah. Please tell me. Okay. Just in March, I've completed my 50, and on my 50th birthday, I decided to do something special, and so I've climbed Raigad 3 times continuously. Oh, Oh, 3 very times up nice. and 3 times down. Very good. So, welcome to the 50s club. Thank you. It's a great club to be in. Yeah. Okay. Our fourth panelist has joined in. He has. I'm happy that he's coming because flight late हो गया, लेकिन घर time में पहुंचा. So बहुत अच्छा लग रहा है. Dr. Mr. Vikas, good evening. हाय राजेश, कैसे हो गुड आप? इवनिंग। बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? सभी लोग को डॉक्टर डॉक्टर बोल के मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करना था, डॉक्टर विकास. But I got two doctors here. So anyway, thanks for coming in. You're welcome. Dr. Pallavi, hi. Hi, Dr. hi, Harshala, how are you? Vikas. Hi. Hello. तो विकास, फिट पेज में अभी क्या नया चल रहा है along with सतारा हिल हाफ मैराथन? जरा बताइए लोगों को. अरे वेरी गुड. सो 1 महीने हो गया है सतारा हिल हाफ मैराथन की ट्रेनिंग को करते हुए. अभी न्यूट्रिशन लॉन्च होने वाला है विद इन फिटपेज, एंड उसके साथ साथ न्यू फीचर्स लाइक गार्मिन इंटीग्रेशन. सो
Now the workouts directly come on your watch. You do not have to go and look at the app, etc. That is happening, and we are excited that it is going that way. Goa is starting Goa River Half Marathon training, so yeah, it's fun. Very, very good, very good. So thank you everyone for coming in. Let's start with the questions. The first question is this: the three pillars of good, I would say, healthy life. Here, एक to exercise, and second is rest, and the third is food. So just tell us, from your opinion, why is this nutrition part of it so important? Because हम तो समझते थे कि भागेगा तो हम कुछ भी खा सकता है. हाँ. Yes, Dr. Pallavi. Yeah. तो भागेगा तो कुछ भी खा सकता है, ऐसा हमको भी पहले लगता था, just before being a runner. क्योंकि ऐसे ही लगता था ना, क्योंकि दैट्स अ कार्डियो एक्टिविटी, और देखते थे कि लोग भाग रहे हैं तो हम भी खा सकते, कुछ भी खा सकते हैं, इतना कैलोरीज बर्न किया है अभी रन करते करते, तो कुछ भी खा सकते हैं. लेकिन जब वो बेली फैट नहीं हिल ही नहीं रहा था, तभी समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज वी आर पुटिंग ऑन द कैलोरीज एंड ऑन एंड ऑन. And although we are burning a lot, still we are putting on the calories, and that is the reason कि हम लोग नहीं कम हो रहे हैं, यार belly fat नहीं कम हो रहा है, या तो हमारा overall fat gain जो हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है. Because the runners they keep on asking कि इतना भागते हैं फिर भी हमारा कुछ भी वजन नहीं घटता. The basic reason behind this is what you eat. It is what you eat is very, very important. And even for the sedentary lifestyle also, it's important कि whatever you eat, that should be nutritious. Not only for the athletes, it is for everybody. Everybody should have a balanced diet. जैसे आपने अभी 3 parameters बताए कि nutrition, sleep and the food, which is very important. So food contributes to 80% of whatever you do. 20% contributes to whatever exercise you are doing. So nutrition, अभी food जो हम लोग खाते हैं वो तो ऐसे just to live and being strong, being healthy ऐसे. लेकिन what nutrition adds value to that food. Like food is nutritive. Food provides you with all the macro and micronutrients which are essential for the recovery. Once you are into exercise, once you are into running, there is a lot of wear and tear which happens in your body. There is antioxidants करके एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके जो हो जाता है इस बॉडी पे, या तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. whatever activity you are doing like exercise, it that puts a stress on your body. And whenever there is stress in the body, ultimately it's going to be inflamed. The body is going to be inflamed. And जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो कम करने के लिए we need to have a right balance of macros and micronutrients. So what are macros? Macros are proteins, carbohydrates, fats, and the micronutrients, which are vitamins and minerals, the trace minerals. So everything in balance is very much required just to have a nice run. Very good. Thank you very much for such a nice explanation. Dr. Harshala, आप जो है basically you are a consultant and also in the nutrition field for around 2 decades, and especially consultancy for obesity. Just tell us how important it is जो लोग obese है या मोटापा है उनको और वो लोग रन करते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन या फूड इनटेक कैसे इंपॉर्टेंस रखता है? ऐसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझो वजन ज्यादा है तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है. क्योंकि मैं ऐसे बोलती हूँ, जैसे 10 किलो वेट ज्यादा है तो आप 10 किलो का एक बैग लेके रन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें वो वजन कम करना है, नहीं तो हम पूरे बॉडी पे उसका प्रेशर डाल रहे हैं. तो इसके लिए सिर्फ भाग के कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा. जितना हेल्दी फूड लेंगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा और अच्छे से आपका रनिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसकी वजह से. अच्छा, थैंक यू. सो ये सब लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, ये इजंट दैट नॉर्मल ईटिंग? मतलब हम लोग जो खा रहे हैं वो नॉर्मल है? विकास, योर थॉट्स ऑन इट. ये व्हाट इज दिस होल कि न्यूट्रिशन जाके ना एक बड़ा एक लाइक अ मैनेजमेंट वर्ड जैसा आ गया ना, क्या न्यूट्रिशन? तो व्हाट इज दिस? Right. To me, I think it's a lot simpler. I think I look at it in very crude way.
नहीं कैमरे के ऊपर तू गाड़ी के ऊपर कैसे संभली थी कैमरा तुझे उछल रहा है someone is talking or what? Yeah. Okay. Yes. So I was saying कि nutrition मेरे हिसाब से बहुत simple है. It is like it's like for you to be able to run your engine, you need fuel. And nutrition is your fuel to be able to continue running the engine at whatever pace or speed that you are planning to go. And if that is not optimal, it starts to impact the performance of the engine. And that means that it is not going to drive the vehicle. मतलब बहुत simple term में it is as simple as that. As we talk about it, that it is not as complex, but rather a lot simpler through basic foods and various additional supplements if foods are not permitting for you to get everything that you require to get. But I think it's a lot simpler than what people think it is. Thank you for the answer. I just wanted to check up. So nutrition is not normal eating. Normal eating it does not mean that you're having it as a it actually is good, right? So I just want to check because we got doctors in our panel. How does one know that they are कि उनको जो है जरूरत है विटामिन की या न्यूट्रिशन की जरूरत है? Is there any test, any medical test which is required or which you recommend अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हार्ट कंडीशन है या एनी अदर कंडीशंस, व्हाट आर द टेस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू शो कि हाँ डेफिशिएंसीज क्या है? डेफिनेटली राजेश, देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट is like first even there for the ladies also, very important test is the iron. They should get their hemoglobins checked, then their B12 levels are to be checked, then vitamin D3 which is very very important, then calcium, and then their electrolytes. Electrolytes, there are serum electrolytes also, they need to be checked. So these are few tests which are to be done. If the runners have some cardiac issues, if they are running with a heavy load, and if their lipid profile is high, if the cholesterol levels are high, they should definitely going to see the 2D echos. That is a must. And then the treadmill test need not matter, but the 2D echo is very very important. Once a runner crosses 40 age, at least once in every 6 months or at least a yearly checkup of the 2D echo is a must, and a lipid profile. For the ladies, B12 and iron deficiencies are quite common. Serum calcium, which is very important for the runners because they run on their legs. So the calcium, which is also a very important test, which they should follow, which they should get it done. Okay, thank you very much, Dr. Pallavi. Dr. Harshala, anything more, especially जो मोटे लोग हैं उनके लिए कुछ अलग सा टेस्ट है या सेम टेस्ट है? ये अभी जो बोले ये तो सब करने चाहिए 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में, जैसे आपके रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड. इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, साल में 1 बार करे तो ठीक है. यदि कोई प्रॉब्लम है तो 6 महीने में रिपीट कर सकते हैं. और जब वेट के बारे में बात करते हैं तो बॉडी में फैट मसल परसेंटेज जो होता है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा फैट परसेंटेज है उतना हर एक चीज का रिस्क ज्यादा रहता है. तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है, उस पे मसल से बैलेंस कैसे करता है, ये सब भी उसके साथ साथ देखना पड़ता है. अच्छा, thank you very much. Calcium deficiency and running, Vikas, any thoughts on it? Yeah, I think it's important to understand that running is an impact exercise, right? So when we are running, we are going to use at least 2 to 3x of our body's weight when we are pushing at every step. मतलब अगर हमारा weight 70 किलो है तो करीब 200 किलो तक का impact होता है as we are running. As a result, what happens is our body, our bones take a lot more impact. So what needs to happen before we start to undertake any such exercise? We need to look at that our bone density is stronger. Before I even suggest anything for calcium deficiency, I would suggest people need to look at vitamin D level in the body, because what happens is that is one of the primary reasons through which the bones are going to get weaker or be prone to fractures, stress fractures, etc. Lot of times, especially अगर weight थोड़ा ज़्यादा है और अगर विटामिन डी का लेवल कम है,
उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे बोन्स वीक होते हैं एंड उसकी वजह से बाद में रिकवरी डिलेड होती है, हमारे बोन्स जो है ब्रिटल हो जाती हैं एज अ रिजल्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में बी कॉज्ड, छोटा सा भी फॉल है तो इट माइट हैव issues on us. So I would suggest we should start by looking at vitamin D3 level check, and then we should ensure that it's at a higher end of sufficiency and not at the lower end of the sufficiency. I would suggest before people start to train for anything, this is something that's apt, because it is also important from a recovery point of view. Even if you are taking impacts and you start to run, आपकी रिकवरी डीलेड होगी अगर विटामिन डी लेवल्स आपके कम है. अगर विटामिन डी लेवल आपका बढ़ गया है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, विच जनरली विटामिन डी लेवल कम होने पे अगर 10% था, अभी हो सकता है करीब 40% हो जाए, विच इज रिक्वायर्ड. एंड व्हेन इट इज देयर, then by default you will see कि calcium level is going to go up. Okay, thank you very much. So calcium is important, that's what we know. And yes, the vitamin D3, right? Yeah, okay, that is also important. Just to focus, why vitamin D3 again? Because that's the key for you to get your calcium level up as well, because you cannot absorb the calcium if your vitamin D3 level is low in your body. तो उसके लिए आपका विटामिन डी लेवल पहले ऊपर होना जरूरी है, then only your calcium can be absorbed. Otherwise it will be a waste even if you're consuming through any supplement for that matter. Okay, thank you. डॉक्टर हर्षला, ये सवाल आपके लिए है. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो फॉर डॉक्टर पल्लवी कैन ऑल्सो ज्वाइन इन, कि न्यूट्रिशन, राइट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एंड एक है कि ट्रेनिंग के दिन न्यूट्रिशन या नॉन ट्रेनिंग के दिन न्यूट्रिशन, इसमें कुछ डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? व्हाट शुड वन टेक केयर ऑफ? डिफरेंस तो है. पहले बिफोर एनी इवेंट और एनी मेन रन हमें बॉडी को तैयार करना है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, और इवेंट के टाइम अलग से उसका ख्याल रखना पड़ेगा न्यूट्रिशन का. ओके, आफ्टर द रन अगेन रिकवरी, ऐसे 3 स्टेजेस में हमें ये देखना पड़ेगा. 3 stages are like, Rajesh, that pre-workout meals which are very very important. During the workout also जो भी कुछ खाते हैं वो भी, that is also very important. And post workout meals, it has to be categorized into 3 things, like pre, during and the post workout meals. Okay, fantastic. अब post workout nutrition recovery के लिए कैसे help करता है? It is very much important because we are putting a lot of stress during any exercise. Like supposing we are talking about the runs now. So जब भी रन करते हैं, तभी रन के बाद, तुरंत बाद, what happens is we are totally dehydrated, right? Because we have been running like 5K, 10K, 15K. So hydration is very important part after the workout. So immediately we have to have sip by sip little bit of water every time once you finish our activity. Then comes the part of replenishment. Whatever losses we have been going through during the runs, like, so we need to replenish our body. For that replenishment, and also the hypoglycemia sets in. Hypoglycemia, as in the sugar level goes down after our runs. So that hypoglycemia has to be recovered by having a nice fruit, a natural sugar. And I recommend a banana post a run, because that is very good source of potassium also, and that hypoglycemia which has been induced because of the runs gets covered up with a single banana. And it is 24/7 available. That is a major thing. And the digestibility, it's very easy to digest. So a banana which replenishes after the run. Then comes a very important part, which is a whey protein. So because it is muscular wear and tear which happens during the run, so we need to have a good source of protein. कि जब मसल का wear and tear हो गया है, मसल का food ही है protein. And so the whey protein, we should have whey protein within 40 minutes, a good source of protein within 40 minutes of our workout. And then are the supplements like the vitamins and minerals.
ओके ग्रेट. प्रोटीन का चर्चा काफी लंबा है तो हम लोग करेंगे उसके बारे में. बट लेकिन एक सवाल ये है कि इज द न्यूट्रिशन डिफरेंट, अलग है फॉर जेंट, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स? No, it's actually the males are more muscular, so they need more of this thing, the more of nutrition in terms of if male and female ऐसे compare करते तो it basically depends on the muscularity. And for the females, if you ask me, it is the level of hormonal changes which sets in the females. They are altogether different for all 28 days. The balance of hormones are altogether different. So the nutrition wise, little bit of difference is always there in a male and a female. ओके, थैंक यू. ये एक आजकल हम लोग न्यूज आइटम्स में बहुत पढ़ते हैं, स्पेशली रनिंग एंड फेसबुक एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जहां पे प्रोटीन पे बहुत चर्चा हो रहा है. प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन. ओके, सो आई विल ओपन दिस क्वेश्चन टू विकास. विकास, इतना चर्चा क्यों हो रहा है प्रोटीन के बारे में? पहले तो ऐसा नहीं था, एक 5-6 साल पहले आज ओनली बॉडी बिल्डर्स बात करते थे प्रोटीन के बारे में. आजकल रनर्स भी बात करें, लाइक डॉक्टर पल्लवी सेड वे प्रोटीन. अभी वे प्रोटीन क्या है बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी क्या है इतना चर्चा क्यों? राइट, एक काम करते हैं, let's take a step back and try to understand these three macronutrients, right? Carbohydrate, which is the preferred source of energy for the body, is one. Fat is something, it is stored as triglyceride in your adipose tissues, and that's the second source of energy. And then third, we have the third macronutrient, as well as a source of energy to some extent, is protein. But यहाँ पे difference ये है कि protein is something that cannot be stored directly in the body in its a functional form. You will see that fat and carbs both can be stored. So you will see visible fat, for example, whether it's around our chest area, waist area, and various other places, the visible fat that's available, or around our organs, that's subcutaneous fat, which is available and can be utilized as an energy source when we are working out. Carbohydrate is more readily available, like I said, and again it's stored about 16 to 1700 kilocalorie, that's available. But in protein's case, what happens is it's not available, it's an active source. Now that's one thing. Second thing to understand, strength training is generally a local muscle centric exercise. As a result, what happens, you will see that protein is more like a scaffolding around your bones, etc. So agar aap strength training kar rahe ho, it is possible that the protein that's available is being used, it's getting remodeled, it's getting piece of. Can you still hear me? Yeah. Okay, but in the other case, what happens is when we are doing a endurance sport, it's not a local muscle specific impact exercise only, it's a whole body specific impact exercise. As a result, what happens, अगर आपने 2 घंटे से 2 घंटे का वर्कआउट किया, on an average you can imagine that about 20 grams of protein will get reduced from your protein balance that you might have used during the from your food. So इसका मतलब ये हुआ कि from your muscles, if the 20 to 30 gram of protein has been reduced, you need to replenish, because the primary function of the protein within the muscle is for it to remodel, for it to be reused, to resynthesize, and then increase in volume, increase in size, and help you with the recovery. अगर ऐसा है तो, and because running is a body wide impact exercise, इसकी वजह से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इस केस में ज्यादा हो जाता है. And that's why Dr. Pallavi also said कि within 30 to 40 minutes of your long workout especially, you should look at fueling with a protein shake, preferably whey protein. Why she said is because it's easily digestible and you are not consuming lot more other calorie, etc. That's why I think protein is so important for endurance sport specifically. Okay, fantastic. Thank you very much, Vikas. Now my question is for Dr. Harshala, because her field of operation is slightly more, I would say, very specific operation, which is obesity. Dr. Harshala, protein and obesity come karne ka, does it, is there any balance or anything like, because
one side you're saying fat kam karo na, so it's that you're trying to reduce weight. How, what is the connection of protein intake and weight especially? Here we have इसमें 3 चीजें जो अभी हमने बात की, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो ये 3 चीजों से हमें एनर्जी मिलती है. तो 1 ग्राम प्रोटीन है या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से 4 कैलोरीज हमको मिलते हैं. फैट है तो इसमें से 9 मिलती है. ये बेसिक इक्वेशन रहता है. तो नो डाउट प्रोटीन अच्छा होगा, जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उतना लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें. Okay. जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेना चाहिए. Okay, great. So it's important the intake of protein is there, and most importantly, लेकिन एक confusion है कि what happens is that कि हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, इतने सारे प्रोटीन्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड ऑल्सो there's 2 questions. एक है कि कितना प्रोटीन चाहिए. ओके, लोग कहते हैं कि ना 1 स्कूप खा लो, 2 स्कूप खा लो, 3 स्कूप खा लो. हाउ डज वन नो कि कितना प्रोटीन खाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सबका बॉडी वेट अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज वन नो हाउ मच प्रोटीन शुड वन टेक? ओके, वेट रिडक्शन के लिए जा रहे हो अलग, वेट नॉर्मल वेट अलग. सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, क्या खाए? What are the things which is available? How does there are different types of proteins, right? What should one be looking at? This is a question which I want to just ask to the panelists. Please tell us कि yes, thank you. अभी पहली बात ये है कि रिक्वायरमेंट कितना है. जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसका रिक्वायरमेंट, ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से रखते हैं हम. तो समझो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना रिक्वायर्ड है. अभी जिस हिसाब से आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आपका शेड्यूल है, उसके हिसाब से ये चेंज होगा. सपोज यू आर डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज इनफ. नाउ इफ यू आर रनिंग, देन अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 ग्राम पर बॉडी वेट रिक्वायर्ड. जैसे आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं, 5-10 किलोमीटर कर रहे हैं, 21K आपका इवेंट है, तो आई थिंक 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज इनफ. लेकिन इफ यू आर रनिंग मोर, यू आर एन अल्ट्रा रनर और ट्रायथलीट, देन मे बी द रिक्वायरमेंट गोज अप टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. तो इन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 60 kg सपोज बॉडी वेट है, तो 90 to 120 इसके हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा. Okay. Dr. Pallavi, you want to add anything? No, that's the only thing. Only thing I wanted to add up is if the athlete is pro, I mean, like if he's doing a triathlon and like extra activities, if he's doing, then it is to be multiplied by 2.5. For the beginners and intermediates, it's 1.5 to 2. And for the sedentary lifestyle, those who are doing nothing, it's 0.8 is all okay, according to that body weight. Okay, ठीक है. Does it happen अगर body weight, I mean, if somebody is obese, तो उनका protein intake अलग होगा, या it is something similarly जो आप कह रहे हो अभी? Similar, just उनका body weight ज्यादा रहेगा तो उनका requirement बढ़ेगा, लेकिन body weight के हिसाब से ही रहेगा. Okay, Vikas, your thoughts on protein intake? I think both of them summarized very well, but I would agree that 0.8 gram for body functions and a basic lifestyle is okay. But as you start to move to endurance sport, your protein requirement increases. Like what doctor said, that suppose you're 60 kilogram, so 90 to 120 gram per day अगर आपका protein requirement है, how I try to do it, I try to split over my 4 meals, for example. मतलब I'll try कि मैं 20 ग्राम ब्रेकफास्ट में खाऊं, मैं करीब 30 ग्राम जो है लंच में खाऊंगा, फिर से 20 ग्राम आफ्टरनून स्नैक के साथ में, और जो बचा है वो मैं शाम को डिनर के साथ में खाऊंगा. उससे क्या होता है, द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्रोटीन बिकम्स गुड एज वेल. व्हाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, इज दैट if the food has more protein takes a little more energy to digest. Because protein takes a little more energy to digest, you are burning a little more energy as well.
So people who are overweight or who need to lose fat or weight, it is rather better कि वो protein rich food खाएं. In fact, अगर आपने आपने carbohydrate लिया, which is simple carbohydrate, उसको digest करने में आपको उतना energy की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? So that's why it is very important for people to keep in mind, one, the protein usage, and second, also possibly split it over different meals through the day. Okay, fantastic. So it's very important that you split it rather than having it everything together. Yeah, because it is going to lead to indigestion, and you're not going to be able to use it as well if you have it just once. Okay. Thank you very much. My question to the panelists ki can everybody get their protein intake levels जो आप कह रहे हो कि ना 60, 80, 120 grams, और if the weight is higher कि protein का जो requirement है ज़्यादा है, how does one get it through diet or through the food? Sure. Should I go ahead? Because vegetarian and non-vegetarian दो लोग हैं, अलग categories हैं. Right. पहली बात तो मैं वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन को छोड़ के पहले मैं जैसे मैंने कहा मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा दैट वी स्प्लिट इट ओवर द डे. नाउ इफ वी आर स्प्लिटिंग ओवर द डे, लेट्स लुक एट एवरी मील. अगर हमारा ब्रेकफास्ट में हमें 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 20 ग्राम प्रोटीन हम कहाँ से ला सकते हैं? अगर वेज सोर्सेज हैं, हम सोया वी कैन लुक एट मूंग फॉर एग्जांपल. जो खड़ी मूंग है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, राइट? अगर कोई एग्स खाता है, एग आर फेयरली सफिशिएंट दैट पीपल कैन लुक एट. लेंटिल्स, कोई भी अगर लेंटिल्स है, अगर उसको हम एज अ स्प्राउट खाएं, दैट इज अ ग्रेट सोर्स फॉर पीपल टू लुक एट. इसके साथ साथ मैं स्वीट पोटैटो भी प्रेफर करता हूँ. अगर लगता है मेरे उस 20 ग्राम में कुछ बच गया, तो व्हाट आई ट्राई एंड डू कि मैं थोड़ा सा वे प्रोटीन लेके उस पे अपने खाने पे स्प्रिंकल कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा वो कोटा पूरा हो जाए, राइट? नाउ वी गो टू नेक्स्ट मील. अगर हम लंच में जाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो यू कैन लुक एट गुड सोर्स ऑफ से फ्रॉम चिकन और फिश, जहाँ से आपको ओमेगा फैटी एसिड्स भी मिल सकते हैं. यू कैन लुक एट अदर सी फूड्स एक्सेट्रा. बट मुझे अगर 30 ग्राम खाना है, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं 100 ग्राम अगर चिकन खा रहा हूँ, तो मे बी आई कैन 100 to 150 ग्राम में आई कैन मैनेज इट. मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बिकॉज माई वेट एंड हाइट, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चिकन खाना पड़ेगा. उसके साथ में आई विल लुक एट देन फर्दर एडिंग मे बी अ लेंटिल. एक मैं दाल ले लूंगा जिससे सफिशिएंट हो जाएगा. अगर वेजिटेरियन है तो पनीर इज अ गुड सोर्स, टोफू इज अनदर वेरी गुड सोर्स, और सब में एक लेंटिल अगर हम ऐड करते हैं, इट्स गुड. अगर बचा, फिर अगेन I'll sprinkle a bit of protein. I always think it works. Same thing applicable for evening, depending on कि हम क्या खा रहे हैं. यहाँ पे we can look at non-processed rice, and together with it again we can look at a lentil. मसूर हम ले सकते हैं for example, etc. Again, you can split into like taking another non-vegetarian option if you are a non-vegetarian. That's how I try to take it. I'm not going to talk about complete protein in a bit because एक ही बार में काफी हो जाएगा, क्योंकि some people say that non-vegetarians get complete protein versus vegetarians do not get all the essential amino acids, but that is something we can discuss later. But I think this should be a good start point. Okay, fine, great. Any more thoughts, Dr. Harshala, Dr. Pallavi, on this? Vegetarian, non-vegetarian. Actually, non-vegetarian is a first-class protein, as it is said. But for the vegetarians also, you can. It depends on the mode of like they are vegetarians, they are lacto-vegetarians is a fad again. The people they have eggs and still they call themselves vegetarians. So it depends on person to person. Okay. Great. Now let's come to supplements, because supplements are आजकल available है. Yes, whey protein is there. ये क्या है चर्चा of whey protein? Why is this? पहले तो ऐसे नहीं था. पहले प्रोटीन हुआ करता था. अभी it's split now. What is whey protein? और वो एक रनर के लिए how important it is and how does it help? Rajesh, basically I would like to tell this in Marathi for the Marathi viewers. Yeah, you can just come closer because the volume is little lesser for you now. Okay. I had a connectivity issue actually. Okay. No problem. मराठीमध्ये मी हे सांगते की व्हे प्रोटीन म्हणजे नक्की काय.
व्हे प्रोटीन म्हणजे दह्याची जी निवड, दह्याचं पाणी आपण जे दही लावताना तो सॉलिड पार्ट आणि लिक्विड पार्ट निघतो. ते लिक्विड पार्ट जो आहे ते म्हणजे व्हे प्रोटीन आहे. आणि हे व्हे प्रोटीन एकदम उत्कृष्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन का मानलं जातं? कारण त्याची जी डायजेस्टिबिलिटी आहे म्हणजे ती पटकन मसल पर्यंत पोहोचतं. विदिन 40 मिनिट्स इट रिचेस अप टू द मसल. म्हणजे मसलची जी वेअर अँड टेअर भरून काढणं आपण म्हणतो, एक ऍक्टिव्हिटी करतो त्यावेळेला आपल्या जे काही मसलची वेअर अँड टेअर होते किंवा चयापचय प्रक्रिया जी होते किंवा जो मसल आपण वापरला जातो तो त्याची बिल्डिंग ऑफ द मसलची प्रक्रिया असते ती पटकन भरून काढण्यासाठी ती व्हे प्रोटीन फार महत्वाचं आहे. व्हे प्रोटीन मध्ये आपण जे म्हणतो अमायनो ऍसिड हे जे ऐकले गेलेले आहेत फक्त 20 अमायनो ऍसिड्स असतात. त्याच्यामध्ये इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियल आणि कंडिशनल इसेन्शियल असे 3 प्रकार असतात. तर ते इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियलचा उत्कृष्ट सोर्स म्हणजे एक तर इझी अवेलेबिलिटी आणि उत्कृष्ट सोर्स ऑल द 20 अमायनो ऍसिडचा उत्कृष्ट सोर्स म्हणून आपण व्हे प्रोटीन कडे बघतो. प्लस आणखीन त्याचं एक बेनिफिट आहे की इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ BCAA. आता हे BCAA आपल्या सगळ्या जे रनर्स आहेत किंवा जे न्यूट्रिशन मध्ये आहेत त्यांना हे चांगलं माहिती आहे की BCAA म्हणजे काय. तर हे 3 प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स असतात, ल्युसीन, आयसोल्युसीन आणि व्हॅलिन. हे 3 जे अमायनो ऍसिड्स आहेत तर ते तुमचं मस्क्युलर बिल्डअप करण्यासाठी फार महत्वाचे असतात आणि ते भरभरचे व्हे प्रोटीन मध्ये असतात. प्लस डायजेशन जो प्रकार असतो तो व्हे प्रोटीन पटकन डायजेस्ट होता आणि पटकन त्या मसल पर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे व्हे प्रोटीन फार महत्वाचे. इतर जे आपण म्हणतो प्रोटीन जे आहे तर ते फॉर एक्झाम्पल जसं आता सोया प्रोटीन आपण म्हणतो किंवा आपण जे काही खातो ते अंड खातो किंवा आपण काही लोक म्हणतात की आम्ही शेंगदाणे खातो त्याच्यातून पण आम्हाला थोडं प्रोटीन मिळेल किंवा चिक्की खातो त्याच्यातून मिळेल. पण ते सगळं जातं तुमच्या पोटामध्ये आणि पोटामध्ये जाऊन मग ते पहिलं काय होतं तर सगळा ब्लड फ्लो तुमच्या पोटाकडे जातो आणि मसलकडे मग त्याची डायजेशनची प्रक्रिया झाल्यानंतर मसलला ते मिळतं. त्यामुळे व्हे प्रोटीन तसं नाही करत. व्हे प्रोटीन डायरेक्टली जातं तुमच्या मसलकडे आणि तेही विदिन 40 मिनिट्स ते जाऊन ते डागडुजी मसलची करायला सुरुवात पण करतो. त्यामुळे व्हे प्रोटीन फार महत्वाचं आहे. प्लस व्हे प्रोटीनमुळे थोडंसं कॅल्शियम पण मिळतं कारण दुधातूनच आपण घेतलेलं आहे. आणखीन एक महत्वाचं बेनिफिट व्हे प्रोटीनचं काय आहे तर इम्युन सिस्टीम जी आपली जी टोल घेतलेली असते इम्युन सिस्टीम, इम्युनिटी आपली कमी झालेली असते एखादी ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर, तर ती प्रतिकारशक्ती जी कमी झालेली असते ती भरून काढण्यासाठी व्हे प्रोटीन हा उत्कृष्ट सोर्स आहे. आणखीन एक काय तर आपण जी ऍक्टिव्हिटी कुठल्याही करतो, एक्सरसाइज करतो तर त्याचे अॅनाबॉलिक आणि कॅटाबॉलिक इफेक्ट म्हणतो म्हणजे ब्रेकडाऊन आणि बिल्डअप. तर बिल्डअप करण्याचं जे काही काम असतं तर ते व्हे प्रोटीन करतो. त्यामुळे व्हे प्रोटीन हा अतिशय महत्वाचा भाग आजकाल आपण जे म्हणतो जसं आता राजेश म्हटले तसं व्हे प्रोटीन हे महत्वाचं काय आहे तर मसलची वेअर अँड टेअर पटकन भरून काढण्यासाठी तो फार महत्वाचा घटक झालेला आहे. Okay. Thank you very much, Dr. Harshala. I just want to check up what does vegetarians ka protein? How does vegetarians take care of the protein intake? It is little difficult for vegetarians to take protein as compared to non-vegetarians, but still there are many options. Paneer is the best option. Soya in many forms like soya milk, soya chunks, then tofu they can take. Besides that, all pulses and lentils are best sources of this protein. Green gram Great. is best, easy to digest also. Milk and That's nice milk because products, just like प्रोटीन का चर्चा आजकल सत्तू पाउडर का भी बहुत चर्चा हो रहा है. ऑर्गेनिक सत्तू, नॉन ऑर्गेनिक सत्तू. yeah, that is also that can be added. Okay. Vikas, I want to ask you this question. In your opinion, there's so many brands available. Okay, protein powder का. Okay, and how does one choose? Because आजकल एक नया brand आ गया, plant-based protein also. So I'm not sure how does one choose a protein which is required for their body. Sure.
because we are talking about protein, I'm assuming you are saying protein supplement, right? Yes, yeah. Right, okay. So अगर प्रोटीन आप सप्लीमेंट से नहीं ले रहे हैं तो आप जनरली फूड से ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, इट्स प्रेफर्ड कि you look at whey protein because of the protein concentration to start with. So जनरली जब हम प्रोटीन लेते हैं, अगर हम whey protein देखते हैं तो whey protein के 3 या 4 डिफरेंट टाइप होंगे. एक नेटिव whey protein होगा जो स्किम मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है. दूसरा होगा आपको हाइड्रोलाइसेट्स, जो these are type of proteins जो हाइड्रोलाइज होते हैं for easier metabolizing. These are one of the most expensive ones. Then the third one is isolates, जहाँ पे fat and lactose को remove किया जाता है, and generally you'll find 90-95% plus protein होता है जो भी weight आप ले रहे हैं एक scoop में, etc. And fourth one is concentrates, and generally you will see this is possibly the cheapest one. I will always suggest, if you are looking at whey protein, look at an isolate or hydrolysate. वन ऑफ दीज टू, कोई भी प्रोटीन है. उसका 2 रीजन है मेरे हिसाब से. एक तो क्या होता है, द बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज दैट सिस्टमिक सिस्टम में उसको जाने के लिए इट्स मच इजियर टू कंज्यूम. एंड देन सेकेंड इज, अगर आपने मान लो 30 ग्राम का एक स्कूप लिया, उसमें यू विल फाइंड 23 to 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इटसेल्फ, एंड बहुत ज़्यादा और दूसरी कैलोरीज आपके पास नहीं आएंगी. वेयर एज व्हाट इट कुड बी, अगर आप दूसरे ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो एक्सेट्रा, या फिर नेटिव ले रहे हो, तब ये हो सकता है कि आपको इतना कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन का उसमें ना मिले, और उसके साथ आपको अलग सोर्सेस से एनर्जी मिलेगी विच मे नॉट बी नीडेड, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, देन इट कुड बी एन इशू. सो दैट्स हाउ आई वुड सजेस्ट पीपल शुड लुक एट. ओके, ये जितने भी आपने ऑप्शंस बोले सभी लोगों ने, इट्स फॉर पीपल विद सर्टेन लेवल्स ऑफ इनकम. तो गरीब रनर क्या करेंगे? प्लीज, the field is open to everyone. What could you recommend? How does who cannot afford all this, because it's very costly, it's not cheap, right? So what are the suggestions from your side for people who really cannot afford the supplement part of it? How can they do it? I know that you talked about tofu and all that, but is there anything else which the poor runner who cannot afford all this? I think it's not a function of someone being poor or rich. मुझे ऐसा लगता है we should start by first figuring out what is our requirement. अगर हमने decide कर लिया कि 100 grams is our requirement of protein, we should try to simply just look at the nutritional value on anything. अगर हम दाल से शुरू कर सकते हैं, दूध पे जा सकते हैं, हम कर्ड खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेयरी हर जगह हमें मिलता है, करेक्ट. अगर मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया, मूंग फॉर एग्जांपल, मूंग और मूंग की दाल इज वेरी रिच इन प्रोटीन, बहुत महंगी नहीं है, हम सबको पता है, एंड दैट कैन टेक केयर ऑफ वन मील फॉर श्योर. दूसरा मील अंडा हो सकता है, दैट कैन टेक केयर ऑफ इट फॉर एग्जांपल. तीसरे में हम मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल. और अगर हमें एक बार में हमें खाना, मान लीजिए हमें वही प्रोटीन या कुछ लेना है, एक स्कूप अगर खाने के लिए, तो अगर हम एक डब्बा लेके आते हैं तो 1 महीने चलेगा, राइट. सो इफ वी स्टार्ट बाय फर्स्ट सीइंग कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड 4-5 अलग अलग सोर्सेस हम देखें, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट. ऑनेस्टली आई थिंक वी प्लान लेस. अगर हम अच्छे से प्लान करें, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ डॉक्टर हर्षला सेड, जितने भी सोया चंक या सोयाबीन या सोया सोर्सेज हैं, they are not as expensive to be able to, I think, get to it. So I think it's a bit of planning. एक एक्सेल में या कहीं हम लिख के अगर देखें, ऑनलाइन गूगल करके हम देख सकते हैं. I think that's a very good start. Very good. Thank you very much for answering that. Dr. Pallavi, you wanted to say something? I just wanted to say कि rice and dal जैसे अभी प्रकाश ने बताया, तो राइस कुछ अमीनो एसिड्स राइस में कम है, तो दाल में वही अमीनो एसिड्स करके हम लोग मिक्स करके खाते हैं. जैसे राइस एंड दाल, राइस इज रिच इन मेथनिन एंड दाल इज रिच इन लाइसिन, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है. तो अमीनो एसिड का जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाता है वेजिटेरियन डाइट में भी. Okay. I think Dr. Yeah. Pallavi जो कह रही थी, because आवाज थोड़ी मफल थी, I want to repeat. I think what she's saying is कि आपको अगर कंप्लीट फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेना है, तो आप डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियन में मिक्स करके खा सकते हो.
इसीलिए अगर हम देखें तो इंडियन हमारी जो रेसिपीज भी हैं वो ऐसे होती हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक हम राइस एंड दाल खा रहे हैं, राइट, अगर हम डेयरी खा रहे हैं उसके साथ में रोटी खा रहे हैं, थिंग्स लाइक दोस्त, तो अपने आप ही सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें ऑलमोस्ट मिल जाते हैं वेजिटेरियन खाने में भी, राइट डॉक्टर पल्लवी, आप यही कह रही थी, राइट? Okay, great. Now, how does one choose a supplement? अगर supplement ले रहे हैं like whey protein powder, because बहुत सारे supplements हैं और उसके nutritional values है, it's written behind, but generally in very small letters. तो अगर चुनना है तो is there anything which you would recommend as panelists when कोई अगर supplement लेना चाहता है over the counter, because बहुत सारे दुकान available हैं, what are the things they should be looking at when they're choosing a supplement? पहले तो वो ये देखना चाहिए कि कौन सा है, जैसे कि अभी विकास ने बताया कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ये आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, हाइड्रोलेज है। हाइड्रोलेज तो फिर भी बहुत महंगा पड़ जाता है। आइसोलेट इज quite nice. This is like everybody can afford isolate, and plus it is lactose free. बहुत लोगों को lactose का intolerance रहता है, यानी the digestion is not proper with the concentrate whey protein. Isolate is a good source, and isolate में भी per serving क्या देखना चाहिए, तो per serving यानी per scoop they should get at least 23 to 27 grams of protein and less of fat and carbohydrates, 0 to 3 grams of fat and 0 to 3 grams of carbohydrates on the ingredients list. Okay, great. Dr. Harshala, any more thoughts on this? It's okay. Okay. So how does one choose, right? I mean, is a protein supplement different for diabetic and non-diabetic patients? Because there's little amount of sugar also in that protein supplement. How can a diabetic person who's got high sugar levels also look at what they are choosing? Nowadays, the supplements are coming sugar-free. Yeah. So we can choose from the sugar-free, and they are absolutely fine for the diabetic people also. In fact, the diabetic people, they need protein. Okay, that's great. Okay, so diabetic people also require protein, and nowadays the supplements are coming without sugar. Yeah. Okay, great. Any recommendations? Any brand names? I know that you're not associated, but if there anything like which you would suggest, कि हाँ, ये हमने खाया and it works for us. Let me ask that. I'll ask you everyone this question. आप लोग कौन सा प्रोटीन लेते हो? So brand name and what do you take? Vikas, you can start. What is the protein you take? Sure. So actually I wanted to go back to your previous question. I'll come to the brand where you said ki how should people select protein, right? How I have selected, I could tell, and it has worked for me. First thing I start to look at कि कुछ भी हो जाए मैं फेक प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, and that's very easy to be able to buy, right? Because क्या होता है कि ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, चीप खरीदने के चक्कर में ऐसा होता है कि हम कुछ खरीद लेते हैं which could be doing more harm than it is benefiting. That's the first thing I would suggest कि only go with the brand that you absolutely trust और उसकी nutritional value आप ध्यान से देखिए, and it's not very difficult to understand. Second thing is when you are selecting a protein, specifically whey protein in my case, because that's what I generally use, you should look at seeing कि ऐसे भी whey protein बनाने में भी processing होती है, so it is processed. Try and see if you can manage with a protein that does not have any other additive like flavors and different other things, because while the taste will become good, उसकी वजह से क्या होगा, एक और किसी और प्रोडक्ट का भी प्रोसेस प्रोडक्ट वहां पे होगा, and we all know that the processed products are not good. So try and see if you can go for something that is non-flavored, so that you know कि सिर्फ मिल्क प्रोसेस हुआ है और कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है. Third thing, like what Dr. Pallavi said, I use isolated or hydrolyzed whey proteins, one of the two. I generally stay with GNC or Optimum Nutrition. These are the two brands that I will be okay with. Hydro Whey is something that I really like, or a Platinum.
these are a couple of products that I will use because it's good, it's easily digestible, acidity नहीं होती है और पानी में भी अच्छे से absorb हो जाता है, digest हो जाता, soluble है पानी में, and it's good for my gut. Very good. Thank you, Vikas. Dr. Harshala, what protein supplements or anything, any brand which you would recommend? I would prefer isolate protein. Brand तो ऐसा कुछ नहीं. Fast enough I have used, it is good. But I prefer more on natural resources. And when there is deficient, I could not complete my requirement, then only I add these proteins. Okay. So yes, Dr. Pallavi, you are the big this thing of whey protein, right? कौन सा brand? I won't recommend any brand as such, but Okay. usually I use Whey Protein ice. ने सातारा मध्ये काय मिळणार? कुठे मिळणार? We get all the brands in Satara. They are pretty good also. Okay, fine. So now I think we're just nearing 1 hour. So I just want to check up, sample diet, okay, for runners. I'll just start with Dr. Harshala because this question is it's a theoretical question. A runner, a person who's obese, and also a runner, okay. If you can just give a sample diet for them. Then I'll come to Dr. Pallavi, and then the high performance I'll ask Vikas. Okay, sample diet for runners. Pallavi normal runners and Vikas high performance because Vikas in that 320 category marathon फला. Okay, तो बाकी लोग हम लोग normal है. ठीक है, so we'll just start with Dr. Harshala. Okay. 3 to 4 meals में divide कर सकते हैं पहले. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइजेशन में प्रोटीन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो उसको डिवाइड करके खाओ, जैसे 15 to 20, 25 मैक्स इतना ले लो एक मील में, तो दैट इज बेटर. तो पहले ब्रेकफास्ट में सब जो नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन ऐड एग्स, और जो भी रेगुलर ब्रेकफास्ट है उसका क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल. सपोज रनिंग कर रहे हैं, कोई हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद वे ऐड कर सकते हैं उसमें, तो मॉर्निंग का अच्छा खासा प्रोटीन भी चला जाएगा और फुल हो जाएगा ब्रेकफास्ट अच्छे से. लंच में वेजिटेरियन है तो दाल पनीर ऐसा कुछ भी ले सकते हैं. थोड़ा कार्ब कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कार्ब जैसे रोटी भाकरी जो भी लेना है तो उसका क्वांटिटी एकदम कम रखो और उसके साथ दाल सब्जी ये ज़्यादा लेना रहेगा तो उससे अच्छा रहेगा. रात को सेम मील ले सकते हैं और 2 मील के बीच में कुछ खाना है तो फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा. नाइट में अगेन थोड़ा लाइट होना चाहिए रात का, उसमें भी थोड़ा दाल या ऐसा कुछ ऐड कर लेंगे तो उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा. ऑन एन एवरेज जैसे फीमेल है तो अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होता है और मेल है तो 2500 ऑन एन एवरेज. तो अभी वेट समझो हमको कम करना है, ओबेसिटी के लिए हम कर रहे हैं तो उसमें से हमको कुछ कैलोरीज कट करना पड़ेगा. अभी ये ऐसे एक जनरल बता रही हूँ, लेकिन ऐसे तो हर एक के हिसाब से उसका देखना पड़ेगा वेट के हिसाब से. तो इसमें क्या करना है, थोड़ा कार्ब का कैलोरीज जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा. तो कार्ब कम और प्रोटीन थोड़ा बैलेंस और फैट भी अप्रोक्सीमेटली 20% उसमें फैट से आना चाहिए. तो ऐसा डिवाइड करेंगे तो अच्छे से वेट लॉस भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी अच्छा रहेगा. Thank you very much. Yeah, this is for people who are overweight. So let's come to normal people also. Dr. Pallavi, what do you suggest? A sample dietary plan. Unmute. Am I audible now? Yeah. So first thing is post exercise, as I told that we should have whey protein. So post exercise, if you have started your exercise in the first part of the day, that is in the morning, if you have finished your exercise, so start your day with the whey protein. Post exercise, 1 banana or a date, which is a sustained release carb, and then a whey protein, a scoop of whey protein, which gives you approx 23 to 25 grams of protein. So पहले ही दिन के शुरुआत में ही प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है. At least 1/4 requirement of the protein has been done. Then comes the breakfast. Breakfast I would recommend to have eggs, but again it depends on the body weight.
like in kgs, multiplied by 1.5 or multiplied by 2. So in the breakfast, I always recommend omelette or the egg whites with the seeds also, because vitamin E is also very much essential. So vitamin E, the flax seeds, all this has to be in the breakfast. And the sprouting, it is a good carb also, and a little bit of protein also comes with the sprouts. Then comes our lunch. Lunch में तो I recommend dahi. Yogurt is a must in my case, because yogurt is a very good source for for the good bacteria. Like pre and probiotic का combination है. Then a little bit of roti will do, and loads of vegetables. And again, if you love sprouts, you can have the sprouts in the lunch. Mid meal is like sprout bale or paneer, uh, or for Marathi people like me, I recommend राजगिऱ्याचा लाडू, शेंगदाण्याचा चिक्की, and chana dal. Hummus is nowadays getting lot of importance, because hummus is a very good source of protein. Hummus बनाना बहुत आसान है, घर पे बना सकते हैं with the chickpeas. That can be used in the breakfast. The peanut butter. अभी काटे सर ने जो वीडियो बनाया था प्रोटीन पे, he has nicely recommended whey protein along with the sabja seeds. So that is also a very good option in the breakfast post workout. And for the lunch and for the dinners, I always recommend dal khichdi, which is again a good source of methionine and lysine as a combination, which I told earlier, for the amino acids. And the peanut butter is good. And we can have like अभी जो मराठी में आम्ही जे मराठीत लोणी आणि शेंगदाण्याची चटणी म्हणजेच पीनट बटर आहे. तर आपण खाऊ शकतो ते सगळ्यांनीच ब्रेकफास्ट मध्ये विथ द टोस्ट. परवा काटे सरांनी जसा व्हिडिओ बनवला होता त्या पीनट बटरचा, तर पीनट बटर नॉट नेसेसरी की तुम्ही डब्यांमधलंच खाल्लं पाहिजे. आपण घरी हे सगळं बनवू शकतो. पांढरं लोणी आणि शेंगदाण्याची चटणी घालून ते पीनट बटर रेडी झालंय. शेंगदाण्याची चिक्की, शेंगदाण्याचा लाडू, राजगिऱ्याचा लाडू, हे सगळं आपण घरी इझिली अवेलेबल आणि इझिएस्ट आणि चीपेस्ट सोर्स आहे. आपल्या घरात हे सगळं असतं, आपण ते खाऊ शकतो. त्यामुळे हे तुम्ही खाल्लं पाहिजे. आणि तूप सगळ्यात महत्वाचं, की गुड फॅट बॅड फॅट हे जे काही आपण म्हणतो त्यातलं गुड फॅट म्हणून आपण तूप हे नक्कीच दोन्ही जेवणांमध्ये, कारण जॉईंटसाठी जसं मगाशी विकासने सांगितलं की विटॅमिन D3 महत्वाचं आहे, तसं जॉईंटच्या लुब्रिकेशनसाठी तुम्हाला तूप जे की घरात आपल्या अवेलेबल आहे ते आपण खाल्लं पाहिजे. Okay, fantastic. Thank you very much for for telling us. I'll just come to Vikas, but I just want to tell the audience, Nutella is not peanut butter. Just wanted to let you know. Okay, people think Nutella is peanut butter. It is not peanut butter. It has got no peanuts in it. Lot of chocolates and sugar and palm oil. Just wanted to let you know. If you're under the impression Nutella is peanut butter, it is not. So Vikas, let's come to you. High performance runners के लिए diet जरा please सबके लिए बताइए please. Sure. Rajesh, I will tell what has worked for me, and this is my conversation in my podcast, what the researchers suggest. So currently, I do about 50 to 55 kilometers per week. मेरा mileage कभी भी ज़्यादा बहुत नहीं होता है. Like for example, when I was doing Chicago, it was a lot lesser than even this. I don't suggest that to everybody because everybody's body is different. I perform well with this kind of mileage. My peak will go to 70, 80 when I'm reaching Berlin, and I think Berlin 320 के आसपास मैं कुछ करूँगा. How I look at nutrition is in the following way. Let's first start by seeing, and in very specific terms, split the macronutrients in percentage values. Fat should be total calories of up to 15% or less is the start point. I would say 30% of your calories should come from protein and 55% should come from carbohydrate. This is the macronutrient ka split to start with. In addition to this, I always try to be above 50 in vitamin D and above 500 for vitamin B12 level. These two are extremely important. Otherwise, I start to get aches and pains and niggles, sleep issues, etc. This is the baseline to start with. Now that we have established that 15, 30, and 55,
the 15% fat that should come, and we should know that 1 gram fat में 9 kilocalories होता है. We should look at oil. Fat is primarily coming from oil in my case, and of course some other food that are there, but primarily from oil. So oil should be high in unsaturated fat, so that MUFA and PUFA is high. So I look at 80% or more. That's one. Second thing, look at high smoke point, above 250 degrees Celsius, because Indian खाना हम बहुत तड़का मारते हैं. My maid is in the kitchen and I can already see कि आवाज बहुत कर रही है. कुछ ना कुछ वो तड़का और बघाड़ते रहते हैं. That's the second point to look at. And third is look for non-refined oil, that is prefer cold press oil, that is that then contains the minerals that are required in the oil. So that's primarily for fat. Now coming to protein, as I already talked about, I will use seafood and chicken primarily to get my protein requirement. Additionally, I'll use a hydrolyzed or isolate whey protein. For carbohydrate, I focus on almost everything unprocessed. I will never have sugar in my coffee, for example, and the unprocessed carbohydrate that I'm consuming, I will primarily consume it with a lot of fiber. And fiber is very important because of many functions, including your digestion. So you will see me like eating kilograms of fruit, literally every second day. You will see कि मैं 1 kilo तो सब कुछ मिला के खा लूँगा. I'm not saying everybody to use. Look at your BMR and your caloric requirement, but fruits, seasonal fruits, anything that I find, whole fruits are my go-to place. I almost never try to drink juice. Coffee is something that I'm very fond of, and you'll always see me making videos of coffee. Coffee has a diuretic property. As a result, it is very important for you to consume caffeine before your workout. But when you're consuming caffeine before your workout, try to have it without milk, because if you have milk which has protein, you might have digestive issue if you are running hard after that. For example, if you decided to have a cappuccino. In addition, of course, there are a lot of things that you have to keep in mind for before workout and during workout, specifically long workout. I only plan my long run with the nutrition. That is only on Sunday. Everything else, 5 days a week, I will work out empty stomach, and that works absolutely fine for me. Because my long runs are 20 kilometers or more, uske liye I need to plan for a good carbohydrate intake before I start. So either 2 banana, or I'll have certain oats with curd and with some fruit. When I'm running, that time I will consume gel. So I take either Precision Nutrition or Mortin ka gel. In 20 kilometers, I will have 3 gels. I have a higher intake of gel because I want to reach about 60 to 70 gram of carbohydrate per hour. That's what I try to consume. And in electrolytes, I'll have 1000 mg of electrolytes every hour. That's in a nutshell everything that I currently use. Very good. I hope the tadka is not too much. We could hear the tadka. So you were just saying about the tadka part of it. But thank you so much for everyone. I think we've come to the end of the session, and very thankful to all the panelists for sharing इतने अच्छे informations और आपने dietary plans भी दिए हैं. And I'm sure जो भी हमारे listeners है, they would have been it would be really beneficial for them. What I'm amazed is the amount of knowledge you guys have, and it's you guys talk about science so passionately. मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर. So nice to hear all of you. So, but before we leave or end the session, Dr. Pallavi, कल का theme क्या है? And कल कितने किलोमीटर आप पब्लिक को भगा रहे हो? कल 12 किलोमीटर भगा रहे हैं. Okay. और theme क्या है कल का? What is the theme for tomorrow? Carb Zindabaad. Okay, you're on mute, Pallavi. Carb Zindabaad है कल. Okay. What is that? Carbohydrates Zindabaad. Carbohydrates Zindabaad. Okay, fantastic. That is nice. So कल का theme, Dr. Harshala is saying Carbohydrates Zindabaad. So thank you very much. आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा.
So bye bye to the audience. Panelists, please remain on seat. I'll just have a small word with you. So thank you very much and bye bye.